is creative. Agar if motivation is there, believe me, anyone can be an inventor, anyone can do a number of things, क्योंकि हम करते रहते हैं. You have to keep it in your mind. So what does creativity means? When I say that okay, creative hona chahiye, then if once we are creative, so it leads to invention. I'm sure you are able to see this slide well, and you will see that what does this creativity means. It could be any kind, हर तरह की किसी भी तरह से उल्टा सीधा कुछ भी डिफरेंट तरीके से कर देना, है ना, अलग तरीके से प्रेजेंट करना, that is creativity. Fine. But question would be, likewise, if you can see here that people have done different way. कार को उल्टा करके टेबल की तरह यूज कर दिया, साइकिल में कुछ चेंजेस करके स्केट्स लगा दिए, तो इट वर्क्स एज अ साइकिल एंड ऑल दैट. सो कार को काट के झूला बना लिया एंड ऑल दैट. सो creativity we all do. This is all kind of jugaad. It will become an invention and it will become beneficial for others too once it develops a taste. That means other people accept it and they take it. If that is the case, your creativity, your jugaad has a potential to become an invention and anyone, paying for it. I'm sure हर किसी ने ये स्लाइड अगर देखा नहीं होगा तो इसको कभी ना कभी सोचा होगा. थिंक अबाउट इट. हमको वी मे फील लाइक भाई अभी तो सब कुछ हो गया है. जब वेलक्रो इन्वेंट हुआ तब वेलक्रो नहीं था, तो दे सिंपल आइडियाज वर्कड एंड दे पिक्ड अप दैट आइडिया एंड नो दे हैड अ कंपनी. अभी तो सब आइडिया खत्म हो गए हैं, आइडिया तो बचा ही नहीं है. तो जब आइडिया ही नहीं बचा है तो नए इन्वेंशन के चांस कहाँ है? सो आई बेग टू डिफर ऑन इट. व्हाई? प्रॉब्लम्स नेवर एंड and newer solutions keep on coming. Every day a new solution comes, and if it is better than earlier one, solving a problem from the earlier times, it becomes new invention, new innovation, and it becomes better thing. जैसे इस पर्सन को देखो कि फोन पकड़ के खड़ा है, और जब ये मोबाइल फोन आया होगा पहले वाला, तो हमने सोचा होगा इसमें भी भाई मोबाइल तो आ गया, अब मोबाइल जब आ गया तो आगे क्या? And we all know where this mobile is going. And present times में same thing with our letter, email, Facebook, Orkut, we all know that. And we have array of apps. अगर आप देखो तो क्वेश्चन ये है कि what do you think? Finished? Innovation finished? अरे इस डोमेन में तो कोई चांस ही नहीं है. अगर आप सोचोगे तो you will find still n number of possibilities are there. What is required? Figuring out a problem, bringing out a solution, and that solution, if you feel that it has potential कि दूसरों को इफेक्ट करे, you can take in writing from me, it has potential to become a business, and it is where your entrepreneurship is. Okay, so now coming to very important component, where is the thin line. So where is the line? कब कोई चीज इन्वेंशन है, कब वो इनोवेशन है, कब वो क्रिएटिविटी है. ओके, एज आई सेड, बेस लाइन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इट इज क्रिएटिविटी. थिंक डिफरेंट, क्रिएट समथिंग, एक्सप्लोर. ओके, एंड वी ऑल आर क्रिएटर्स. हम में से हर कोई क्रिएटिव है, वन वे और दी अनदर. ओके, एनीवे जब भी कोई भी चीज आप डिफरेंट तरह करते हो, दैट मेक्स यू क्रिएटिव. व्हेन दैट क्रिएटिविटी बिकम्स इन्वेंशन, as I said, when there is a problem, you bring out a solution, that becomes the invention. Means जो भी जुगाड़ अगर आपने कोई भी चीज नए तरीके से किया, कोई भी नया solution निकाला, that becomes an invention. Question is when this invention becomes an innovation, and this is where government is emphasizing on, and where this innovation council comes into picture, and there all these things are. Creative हम सब हैं, इन्वेंशंस भी हम करते रहते हैं. तो व्हाट इज नया? गवर्नमेंट नया क्या प्रमोट कर रही है? गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इनोवेशन. एंड व्हेन इट बिकम्स इनोवेशन, whenever there is a profit
potential in an idea, in an innovation, in a creativity, it becomes innovation. Means कि अगर आपका आइडिया प्रॉफिट की तरफ जा सकता है, it becomes innovation. Okay, so idea here is, this is what government is emphasizing on. You have creativity, you do n number of innovations, inventions. Now it is time you make these inventions as innovations. And then these are some of the examples that um, does an innovation has to be a physical thing only? सिर्फ फिजिकल फॉर्म में होने से होगा क्या इनोवेशन? नहीं. फेसबुक, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेरी सिंपल. हम से हर कोई यूज करता होगा फेसबुक. व्हाट्सएप हर कोई यूज करता होगा, है ना? सो इट is not required to be in physical form all the time. Amazon, शॉपिंग करते होंगे हम लोग. फ्लिपकार्ट, एन नंबर ऑफ पीपल मस्ट बी यूजिंग. शॉप्स का ट्रेंड चेंज हो गया, घर में आपको सामान मिलता है ना? एन नंबर ऑफ वेज. So that means it is not always that an invention can be innovation by virtue of that only if it is converted to a physical form. If we have an idea, even if it remains as an idea, but if one can have benefit out of it, it becomes innovation. Counseling, you know that counseling is another way in a innovation. So that means I counsel you, I earn from you, it becomes innovation. So very critical it is. Again I'm emphasizing on this slide, and again I'm emphasizing converting creativity to innovation, converting inventions to innovation. That is what is required. We have had been doing n number of inventions, but we never thought of having benefit out of it. And as a result, Western world has harvested the benefit. बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हमने इंडिया में, हमारे यहाँ पे इन्वेंट हुई होंगी, हमने बनाई होंगी, हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई होंगी, हमारे साथियों ने बनाई होंगी, बट शायद हम यूज नहीं करते होंगे, कोई और उसको प्रोटेक्ट करके उसको यूज करता होगा, उसका बेनिफिट लेता होगा, नॉट ओनली यूज करता होगा, उसका बेनिफिट लेगा होगा. सो दैट इज वेरी क्रिटिकल. ओके, दैट वी कन्वर्ट अवर इन्वेंशंस टू इनोवेशंस. So question is, if that is the case, an invention has to become an innovation. So what is required? So what are the steps which are to be taken so that an invention or creativity becomes innovation? It is not random. ऐसा नहीं है कि just blind shot से it can be done. Baseline could be there. That means idea का acquire है, and जो आप acquire करते हैं, that could be that could be simply you're walking somewhere, like velcro की example दिया, straw की example दी कि अचानक आपको strike किया. Idea can come at any point of time, but converting that idea to innovation has a process, and one has to think of it. Shortcuts नहीं. Idea आपका अच्छा है, but it has to go through steps. So if you are able to take it, and if you are determined, as I said, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है मोटिवेशन, that you are motivated enough that okay, you will go through this process and make your creativity and innovation. If you are, if you have that in your heart, I'm sure you will be able to. And that process is अपनी प्रॉब्लम की रिसर्च, देन डेवलपमेंट. रॉ आइडिया को मॉडिफाई करो, अगेन मॉडिफाई करो, अगेन एंड मॉडिफाई करो, सो दैट फाइनली यू हैव डेवलप्ड समथिंग जिसको आप टेस्ट कर सको. सो इफ दैट आइडिया कैन बी टेस्टेड, एंड इफ इट कुड बी जनरेटेड इन बल्क, सो दैट बिकम्स प्रोडक्शन. एंड इफ इट इज प्रोडक्शन, दैट मीन्स अगर आपको प्रोडक्ट आपको बल्क में बनाना नहीं है, बल्क में बनाने के बारे में, प्रोसेस के बारे में फिगर आउट करना है, and that becomes your production. Then comes the marketing, and if then it is marketed and people like it, it is in use, and then you are multi-millionaire and millionaire. Okay, so that means
using research, developing, producing, marketing and use. बेस लाइन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बाकी वाले सारे कंपोनेंट्स के लिए आपको बहुत सी हैंड होल्डिंग के लिए बहुत से लोग मिल जाएंगे. एंड प्रेजेंटली लाइक योर इनोवेशन काउंसिल, जो आपके फैकल्टी है, जो आपके कोलीग्स हैं, they would be there to help you, you know. So what is required at your end? Be creative, do some research about it, see how you can modify it and make it better, and then taking it towards protecting your idea and all that. So that is your IPR thing. Okay, I'll come to IPR in just a minute. So what are the incentives? So we learned that innovations, yeah, inventions or creativity can be made converted to innovations. So innovation से incentives क्या है, benefits क्या है, and there comes some of the ways one can protect the ideas. It is simply like, और हम में से कोई भी इस तरह नहीं सोचता है, हम में से कोई भी जो अपने थॉट प्रोसेस को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझता है, नहीं एक्ट करता है that way, and that's why it is lost. It is simply like your property. जैसे आपने अगर कार खरीदी और अगर आप उसको बेचोगे, you can earn out of it. Same way your thought process, जो आपका आइडिया है, जो आपका जो थॉट है, if you are able to protect it, it becomes your property, and when you sell it, you earn from it. And this is what intellectual property is. So we call it intellectual property because it is not something tangible. Physical नहीं है, ये आइडिया है या physical form में नहीं है, but because you have protected it, it becomes your property, and that property can earn you. It could be a patent. Patent means when it has technical components associated with it. Whenever it has technical components associated with it, be it idea, be it a physical component, मैंने जैसे examples share किए, it can be protected as patent, and that gives you rights for 60 to 17 to 20 years. That means for that period, if anyone wants to use it, has to pay you. It is a legal, इट इज लाइक रजिस्ट्री. जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो पेटेंट इज लाइक रजिस्ट्रेशन. दैट मीन्स वी हैव रजिस्टर्ड योर आइडिया विद द गवर्नमेंट, तो वो लीगली आपकी प्रॉपर्टी बन गई. आप उस किसी को भी उस प्रॉपर्टी को यूज करना है, आपको किराया देना पड़ेगा या आपको पे करके आपसे खरीदना पड़ेगा. सो यू कैन सिंपली थिंक इट दैट वे. अनदर थिंग इज कॉपीराइट. सो दैट pertains टू बुक्स, नेम्स, ब्रांड नेम्स, जैसे काफी नाम के साथ, जैसे से यू कैन थिंक ऑफ एनी किसी कंपनी का नाम. सो नो वन कैन यूज इट, यू नो, इफ वन वांट्स टू. इफ एनीवन वांट्स टू यूज इट, से एडिडास, आप लोग शूज पहनते होंगे, या टाइटन घड़ी पहनी होगी आपने. सो दीज आर ब्रांड नेम्स. एनीवन वांट्स टू यूज दीज ब्रांड नेम्स हैव टू पे. मीडिया इवन, से जी न्यूज, अपने जे&के जैसे टाइम्स नाउ, एंड नंबर ऑफ जो भी न्यूज चैनल्स हैं, डेली एक्सेलशियर. So these are brand names. Anyone wants to use this have to pay for the, you know, using this brand. And then जो document इसको protect करता है, that is copyright. Trade secrets, कि काम करने का तरीका आपका कुछ, likewise you know that हमारे वहाँ पे काफ़ी बहुत से food processing, जो मतलब कि हलवाई बोल सकते हो या जिनकी special trade वो होंगे, but we don't, no one protects that. आप में से actually it's not physical, so difficult to see, but I'm sure many of you know खुद का पतीसा. It's a very interesting story associated with it. अभी recently they had received, they have filed copyright and you know, trademark. दोनों brothers में आपस में fight हुई और one has filed the trademark. Likewise many you know brands you would know जिन्होंने अपने को प्रोटेक्ट किया, बट ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पर अभी भी प्रोटेक्शन नहीं किया जाता है. काफ़ी चीज़ें वी लूज ड्यू टू इट. जैसे पुंछ की राजमा, आई डोंट नो एनीवन हैज एवर ट्राइड टू प्रोटेक्ट इट. मंडी की राजमा, वी ऑल नो दैट इट हैज़ पोटेंशियल, कुछ डिफरेंट टेस्ट होता है, हम हर में से हर कोई पसंद करता है कि हमें वहाँ से मिले, बट इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड दैट वे. Likewise, so all these ways
legal ways by which we can protect our ideas, we can safeguard these ways make an idea a property, and all these laws which are associated. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. So all these ways we can protect these becomes your intellectual property ways, and these rights becomes your intellectual property rights. I think technical information point of view say this is more than enough to know what are IP and all. So I'll rush towards few more examples, because my perspective and the perspective of this council is to motivate students so that they go towards using it, applying it, thinking different way, that how one can make benefit out of. अब इसमें सब देखोगे 1.5 तरह की एग्जांपल्स कि सब के सब इनोवेशंस हैं, एंड बहुत वियर्ड वियर्ड से इनोवेशंस हैं. एक ने अंगूठे की शेप में वो बनाया है पेन ड्राइव, किसी ने टॉयलेट सीट को मोबाइल कर दिया है, किसी ने फोन को बांधने का वो कर दिया है, तो एक ने टेबल में उस तरह का कर दिया कि इट इज लाइक अ डॉग, एंड सो यू कैन सी ऑल दैट मीन्स डिफरेंट तरह के लोगों ने दिमाग लगा के वो तो कर दिए, बट it is not required all these creativities, all these innovations will become inventions. It will become innovation only when it has commercialization potential. So spending your time about an invention you think is important, think about its potential, whether it has potential to be commercialized, and then only it will become innovation. So these are the 4 components which are very important when we think of innovation, कि हमें ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अगर हम इन 4 चीज़ों का आंसर हमारे पास है तो बाकी सब कुछ जो है वो धीरे धीरे बिल्ड हो सकते हैं और सब कुछ रिलेटेड है. उसमें सबसे पहले व्हाट, कि भाई है क्या, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं सोच क्या रहा हूँ, चीज़ क्या है. नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस, कि करूँगा कैसे, है क्या. से प्रोडक्ट क्या है, अगर से लेट्स टेक अ प्रोडक्ट, से कंबल इज अ प्रोडक्ट, तो कंबल बनेगा कैसे. इफ यू हैव आंसर फॉर दिस, देन कम्स खरीदेगा कौन. इफ यू हैव आंसर फॉर दिस, एंड देन इफ यू हैव दैट, वहां पर पहुंचेगा कैसे. अगर आप ये 4 क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है, क्या, कैसे, कौन और कहां, अगर इन क्वेश्चंस का आंसर है आपके आइडिया आपके आइडिया से रिलेटेड, यू कैन टेक इन राइटिंग फ्रॉम मी दैट इट हैज पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी गुड बिजनेस. अपने आप किसी भी आइडिया जो आपके पास है, अगर आप इन चीज़ों का आंसर ढूंढ लेते हैं, तो एंड इफ यू वर्क अराउंड इट डेडिकेशन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ, आई एंश्योर यू दैट इट इज गोइंग टू बी अ बिग सक्सेस. किसी भी आप बिजनेस को ले लो, all these businesses have these components, all these innovations have these components. So जो भी आइडिया आपके दिमाग में है, think of that idea in these perspectives, and if you have the answer, great. If you don't have the answer, try to find the answer, great. If not, think of another idea, क्योंकि आइडिया की आपके पास कमी नहीं है. I know that we are very creative. So yes sir, I'll now come to this, that why स्टार्टअप्स के पास या यंगस्टर्स के पास ही क्यों पहुंच गई सरकार या हम लोग टीचर्स, आप लोगों को क्यों बोल रहे हैं भाई थिंक डिफरेंट. सब लोग तो बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं. आई थिंक ऑल ऑफ योर फैकल्टी मस्ट बी PhD और हैविंग PhDs और आर टूवर्ड्स हैविंग PhD, है ना, या आर हैविंग हायर डिग्रीज. भाई जब बड़े बड़े लोग इतने तेज पढ़े लिखे, बड़े बड़े साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, तो वाई हम, दिस क्वेश्चन कम्स ऑफन इन द माइंड ऑफ द किड, भाई हमें क्यों परेशान कर रहे हो कॉलेज लेवल पे, जब भी तो हमारी डिग्रियां स्टार्ट हुई हैं. व्हाई वी नीड टू थिंक ऑफ innovation and business and all. If you see the statistics, highest success rates of the startups or the new ideas is from the youngsters, not from the senior. Like मेरी कैटेगरी और धीरे धीरे करते जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं, तो
हमारे आइडियाज का पोटेंशियल उतना नहीं रहता है जितना यंगस्टर का. तो दैट मीन्स आपके आइडिया का और आपकी एनर्जी का जितना आउटकम का पोटेंशियल है वो मेरा नहीं. That is why, despite the fact that there are n number of industries with extensive financial backup, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास, रिलायंस इंडिया में बोल लो, इतना पैसे है कि कुछ बस मतलब कि हैज टू सिंपली पुट. बट उसके आइडियाज भी, जो उसके पास अच्छे आइडियाज आते हैं वो सारे यंगस्टर्स के थ्रू आते हैं. दैट्स व्हाई दे कीप हायरिंग न्यू पीपल. सो आइडिया हियर इज, यू हैव टू बी मोटिवेटेड इनफ एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ कि डिग्री होने के बाद नहीं, डिग्री होने के साथ साथ you have potential to transform your idea to an innovation. Okay, and these are the facts. These are some statistics over here. These are numbers, and numbers don't lie. Numbers सच बोलते हैं. Okay, so I think coming towards my last slide, again emphasis is don't limit yourself. अपने आप को, not only limit yourself, don't underestimate yourself. First think you have potential, you have capabilities, you have good ideas, you are creative. Think different ways.